Okay, friends, in this video, we are going to discuss about substitution reaction in octahedral complexes. Substitution reactions in octahedral complexes. Substitution मतलब किसी एक का replacement होता है किसी एक से. In octahedral means octahedral के पास कितने होते हैं? बस आपको याद रखने का है. First thing कि octahedral has 6 bonds. जैसे for example ये metal ion है, तो ये 4 ligand होंगे. इसको थोड़ा आपको माइंड में रखना है क्योंकि ये सारी चीजें इन्हीं से रिलेटेड होती हैं. तो ये चारों लिगेंड प्लेन में होते हैं. एक लिगेंड ऊपर होता है, एक लिगेंड नीचे की साइड होता है. ये दोनों लिगेंड जो ऊपर नीचे लिगेंड होते हैं वो कहलाते हैं एक्साइल लिगेंड्स एंड दीज 4 लिगेंड्स आर इक्वेटोरियल और प्लेन में होते हैं. So these are two kinds of, first is nucleophilic or ligand substitution, that is also known as SN. SN means S represents substitution and represents nucleophilic. ओके, न्यूक्लियोफिलिक मैंने आपको बता दिया कि न्यूक्लियोफाइल एजेंट क्या होता है जो कि न्यूक्लियस लविंग होता है, मतलब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा. न्यूक्लियोफाइल के ऊपर क्या होगा? नेगेटिव चार्ज होगा, या नेगेटिव चार्ज मीन्स इलेक्ट्रॉन रिच होगा, या न्यूट्रल भी हो सकता है जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन रिच हो तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके. So a nucleophile or ligand is replaced by another ligand in coordination complex. कोई भी coordination complex है, for example MLN. N मतलब number of ligands. M means metal, L means ligand, N means number of ligands. अगर ये कोई complex है, इसकी reaction अपन किसी दूसरे ligand से करवाते हैं, let's L dash. So कौन सी reaction बनेगी? ML N minus 1 L dash plus L. N-1 का मतलब क्या हुआ? जो प्योर लिगेंड है L, उसमें से एक लिगेंड का रिप्लेसमेंट हो जाता है किससे? L डैश से. यानी कि एक लिगेंड क्या करता है? दूसरे L को रिप्लेस करते हैं. L डैश मतलब अनदर लिगेंड, कोई दूसरा लिगेंड, याद रखना है ना. इसको ऐसे भी समझ सकते हैं. सपोज MX6 है, ये कोई Y आया और ये बना देगा MX5 प्लस MX5Y प्लस X, यानी कि इसने X के एक लिगेंड को इसने क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया Y में. तो ये क्या हो गया? न्यूक्लियोफिलिक और लिगेंड सब्स्टिट्यूशन. नाम से पता चल रहा है लिगेंड का सब्स्टिट्यूशन होगा. सो दैट्स व्हाई इट इज SN और न्यूक्लियोफिलिक और लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. These reactions are very common. जनरली ऐसी ही रिएक्शंस ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के केस में देखी जाती है. सेकंड इज इलेक्ट्रोफिलिक और मेटल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. इसको क्या कहते हैं? SE सब्स्टिट्यूशन एंड E मतलब इलेक्ट्रोफिलिक. इलेक्ट्रोफिलिक मतलब जिसके ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक मतलब जो इलेक्ट्रॉन से लव करेगा, इलेक्ट्रॉन लविंग होगा. तो इसका मतलब इसके ऊपर क्या? पॉजिटिव चार्ज होगा. ओके, तो एन इलेक्ट्रोफाइल और मेटल आयन इज रिप्लेस्ड बाय अनदर मेटल आयन. मेटल आयन अगर मेटल आयन से रिप्लेस होता है तो वो क्या? इलेक्ट्रोफिलिक और मेटल सब्स्टिट्यूशन. लिगेंड से सब्स्टिट्यूट होता है तो क्या कहता है? लिगेंड सब्स्टिट्यूशन. तो इन केस ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक मेटल आयन क्या करेगा? मेटल से रिप्लेस होगा. जैसे MLN है, अब ये मेटल डैश कोई दूसरा मेटल है, अब इसने क्या कहता है? इस मेटल को इस मेटल ने रिप्लेस कर दिया. तो ये क्या बन गया? M डैश LN प्लस M. इसको ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल F आयरन है, ये कोई आयरन X6 है प्लस कोबाल्ट आ रहा है. अब ये कोबाल्ट क्या करेगा? इस आयरन को रिप्लेस करेगा और क्या बन जाएगा? कोबाल्ट X6 प्लस आयरन. ओके, तो ये क्या हो गई? मेटल मेटल को रिप्लेस कर रहा है. दैट्स व्हाई क्या बन गई? मेटल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस और इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस. दीस रिएक्शंस आर लेस कॉमन एंड फ्यू आर नोन. तो मेटल मेटल रिप्लेसमेंट बहुत ही कम है, देखने को मिलता है, लेकिन मिलता है. सो दीज आर वेरी लेस एंड वेरी फ्यू आर नोन. ओके, सो दीज टू टाइप ऑफ लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसको अपन अभी डिटेल में पढ़ेंगे. ओके, नाउ कम टू द मैकेनिज्म ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. कि ये जो दोनों अपन ने पढ़ी, लिगेंड सब्स्टिट्यूशन एंड मेटल सब्स्टिट्यूशन, तो उनकी मैकेनिज्म क्या होती है वो मैकेनिज्म अपने को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट रिएक्शंस अपने पढ़ा था न्यूक्लियोफिलिक और लिगेंड सब्स्टिट्यूशन, जिसको SN1 रिएक्शंस भी बोलते हैं. लिगेंड सब्स्टिट्यूशन मींस लिगेंड का सब्स्टिट्यूशन होता है. सो दिस रिएक्शंस कैन अंडरगो विद टू वेज. फर्स्ट वे बोलेंगे अपन, या फर्स्ट टाइप को मैकेनिज्म बोलेंगे SN1 और डिसोसिएटिव मैकेनिज्म. SN1 as substitution and nucleophilic substitution. One means unimolecular. So this is unimolecular or first order reaction. Unimolecular मतलब क्या होता है?
इनकी रिएक्शंस का ऑर्डर क्या हुआ, फर्स्ट ऑर्डर हुआ। और इट कैन बी शोन एज, जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई mx5y कॉम्प्लेक्स है और z कोई दूसरा लिगेंड है, ये mx5y ये 6 बॉन्ड बना रहा है मेटल, दैट्स व्हाई इट इज ऑक्टाहेड्रल। इसके कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या होता है, मेटल आयन से जितने लिगेंड्स अटैच होते हैं, मेटल आयन से जितने लिगेंड अटैच होते हैं वो सारा उसको क्या कहता है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। So in case of octahedral, there are 6 ligands associated to metal ion. That's why it has 6 coordination number. And Z is another ligand. So what happening here? अब क्या हो रहा है, Z क्या कर रहा है, इस Y को रिप्लेस कर रहा है। Z क्या दूसरा लिगेंड है, तो Z क्या करेगा, इस Y को रिप्लेस करेगा और कॉम्प्लेक्स क्या बन जाएगा, mx by Z, और Y अलग हो जाएगा, राइट। So in both the cases you can see, in the case of reactant coordination number is 6, in case of product तो coordination number is 6, यानी कि दोनों केस में क्या बन रहा है, reactant में भी octahedral complex रिमेन रहता है as it is, और product में भी octahedral shape ही as it is रहती है। So here main metal and x y z are ligand. So x y और z क्या हो गए, ligand हो गए, और main मतलब metal हो गया। It is two step process. ये जो process है SN1 dissociative mechanism, ये two step process होती है। The first step is slow, जो first step होती है वो slow होती है, and metal ligand bond breaking step, first step में क्या हुआ, metal ligand का bond break होगा, राइट। जैसे देख सकते हो आप, mx5 के कोई मेटल लिगेंड अभी अपने रिएक्शन से देगा, mx5 बाय ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। ये फर्स्ट स्टेप स्लो ही, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, एंड इसमें क्या हुआ, मेटल लिगेंड का बॉन्ड ब्रेक होता है। मेटल लिगेंड कौन सा, मेटल और वाई जो लिगेंड है, इन दोनों का बॉन्ड क्या हुआ, ब्रेक हुआ, और क्या बन गया, mx5 और y। अब mx5 इसमें 5 बॉन्ड ही है, सो दैट्स वाई इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, स्क्वायर पिरामिड हो सकती है या ट्राइगोनल बाई पिरामिड हो सकती है, और 5 लिगेंड है, दैट्स वाई इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हुई, 5 हुई। ओके ये इंटरमीडिएट स्टेट होती है और शॉर्ट लिविंग स्पीसीज होती है। सो इट इज अ बॉन्ड ब्रेकिंग स्टेप which where mx5 is dissociated into mx5, that's why it is called dissociation। इसको dissociative mechanism क्यों बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पे लिगेंड मेटल आयन और लिगेंड के बॉन्ड का जो है ब्रेक हो रहा है और डिसोसिएट हो रहा है बॉन्ड का, मेटल और लिगेंड के बॉन्ड का, सो दैट्स व्हाई इट इज डिसोसिएटेड। और उसके बाद जो 5 कोऑर्डिनेटेड स्पीसीज बनती है उसको एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहते हैं, उसकी एनर्जी बहुत हाई होती है, स्टेबल नहीं होती। इट इन्वॉल्व्स वन रिएक्टेंट, इसमें क्या है, ये एक ही रिएक्टेंट इन्वॉल्व हो रहा है, दैट्स व्हाई इसकी जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस कहते हैं अपन, क्योंकि अपने को पता है कि कोई भी रिएक्शंस में जो स्लो स्टेप होती है वो ये डिटरमाइनिंग स्टेप होती है। तो स्लो स्टेप में क्या हो रहा है, सिर्फ एक ही कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व हो रहा है, एक ही रिएक्टेंट इन्वॉल्व हो रहा है, एक ही रिएक्टेंट इन्वॉल्व होने की वजह से इसका जो ऑर्डर निकल के आएगा दैट वुड बी फर्स्ट ऑर्डर, सो इट इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। In second step, the activated complex mx5 may attach rapidly to nucleophile Z। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, क्योंकि अपने को पता है फर्स्ट स्टेप हमेशा स्लो होती है, सेकंड स्टेप हमेशा फास्ट होती है, तो सेकंड स्टेप में क्या, जो इंटरमीडिएट बना है mx5 वो क्या करेगा, दूसरे लिगेंड के ऊपर अटैक करेगा। तो सेकंड स्टेप में क्या होगा, mx जो इंटरमीडिएट बनता है स्क्वायर पिरामिडल या टाइप गोनल बाई पिरामिड ज्योमेट्री का इंटरमीडिएट बनता है, दैट इज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, इट विल रैपिडली अटैक टू जेड लिगेंड। जेड लिगेंड मतलब दूसरा कोई लिगेंड है, उसको इमीडिएट अटैक करेगा, क्योंकि ये स्टेबल नहीं होती, इसको स्टेबल होने के लिए ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनाने के लिए दैट इज मोर स्टेबल देन स्क्वायर पिरामिड एंड टेट्रागोनल बाई पिरामिड, दैट्स व्हाई इट विल अंडरगो टू it will attack on Z and form a octahedral complex. So and it is very fast, it is very rapid. So at the end it will form mx5z, that is octahedral complex, and coordination number is 6. So in the reactant coordination number is 6, in the product coordination number is 6. The activation energy of first step is high। एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है फर्स्ट स्टेप की, ये फर्स्ट स्टेप है। एक्टिवेशन एनर्जी इन माय प्रीवियस वीडियो में आई डिस्कस्ड यू दैट की एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, जो रिएक्टेंट होता है और ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, दिस इज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर एग्जांपल, इसको यहाँ से यहाँ ले जाने के लिए, रिएक्टेंट को एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक पहुंचाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में सिंगल रिएक्टेंट काम यूज होता है, तो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत हाई होती है, एंड सेकंड स्टेप बहुत ही फास्ट होती है, दैट्स व्हाई इसकी एक्टिवेशन एनर्जी सेकंड स्टेप की बहुत कम होती है। एंड रेट रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड एज, और इस रिएक्शन का ओवरऑल अगर रेट रिएक्शन अपने को लिखना है, रेट ऑफ रिएक्शंस, तो हाउ कैन वी राइट, द रेट ऑफ रिएक्शन इज k mx5y। अब इसमें एक ही रिएक्टेंट यूज हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। तो
So overall, how can we represent the reactions? We can represent the reactions like this. MX5 initial reactant. This is the first step, that is slow step, and there is a dissociation of Y. This is redetermining step, and intermediate state is formed after first step, that is MX5. It is intermediate state. Its geometry is trigonal, bipyramidal, or square pyramidal. Okay, and it is penta coordinated. ये भी आपको याद रखना, it is penta coordinated. Penta coordinated क्यों है? क्योंकि इसके पास 5 ligand, and then it will undergo second step, that is very fast. There is attack on Z ligand. Now Z ligand is associated with MX5 intermediate step, and at the end octahedral complexes form MX5Z, in which coordination number is 6 and geometry is octahedral. This is the overall ligand substitution reaction of octahedral complex. So diagrammatically, we can understand the dissociative mechanism as one mechanism in octahedral complex. So initially, you can see that is here is over here there is a octahedral complex where coordination number is 6. Metal ligand center में है, and X, and these 4 same ligands are at equatorial position and in the plane. But axial ligand 1 is Y, and 5th ligand is X, and 6th ligand is different from 5 ligands, that is Y. In the slow step, first step, this is the first step. This is a slow step where Y is dissociated from the octahedral complex. Okay, then in intermediate square pyramidal or trigonal bipyramidal geometrical intermediate state is formed where coordination numbers are 5, and it is also known as penta coordinated species. Okay, and at the end in second step, this is the second step is very fast, and there is the association of Z, because this intermediate step, which is very active, this is very unstable, so that's why it immediate attacks on the another ligand, that is Z, and now Z is occupied 6th position of the octahedral complex, or at the end octahedral complex is formed again. So ligand Y is replaced by ligand Z. This is a very simple thing. Okay. In this reaction mechanism, you have to remember 2 things. Your intermediate state that is penta coordinated, and its coordination number is 5, and its shape is a trigonal bipyramid or square pyramidal shape. So this is all about the dissociation mechanism or SN1 mechanism of octahedral complex. Now the second mechanism is SN2 or associative mechanism. SN means S represents or denotes for a substitution, and is nucleophilic substitution. 2 means bimolecular. So it is bimolecular nucleophilic substitution and second order reaction. It considers 2 steps. First step is very slow, as we know, and where metal ligand bond is associated. मीन्स जैसे अपन डिसोसिएटिव में पढ़ा था कि डिसोसिएट हो रहा है, मेटल लिगेंड बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, बट इन दिस केस द मेटल लिगेंड बॉन्ड विल बी फॉर्म. सो इनिशियली देयर आर 6 plus 1 ligand will be associated, and 7 coordinated intermediate state will be formed. So like this you can see here that MX5 or Y, ये कोई एक metal complex है, octahedral complex, where coordination number is 6. It undergoes first step, that is very slow step, and there is the association of Z. The Z ligand, that is another ligand Z है जो क्या करता है, associate होता है MX5 पे, and it forms MX5YZ. Now it is a 7 coordinated system. So 7 coordinated intermediate state, and coordination number is 7. और इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? 7 है, that's a pentagonal by pyramidal geometry. Okay. So it is bond associating step where MX5 is associated with Z and forms MX5YZ, and which is association. So that's why this step is known as associative association mechanism. And 7 coordinated intermediate activated complexes formed. Whenever I say intermediate
species या intermediate state या intermediate species, then that is activated complex. So it involves two reactants initially. First Z and second one is MX5Y. So that's why it forms 7 coordinated complex as an intermediate state. It is electron rich, 7 coordinated, coordination number 7. So it is rate determining step. First step is always rate determining because it is slow step. In second step, the activated complex MX5YZ rapidly leaves Y. So क्योंकि ये 7 coordinated हो गया, means octahedral is more stable than pentagonal bipyramidal, and this activated complex is very high in energy. That's why it's want to be stable. So that's why immediately it leaves the Y to get 6 coordination number like octahedral complex. Okay, so MX5YZ undergoes rapid to leave Y and it forms MX5Z. This is the coordination number 6. Intermediate state coordination number is 7. So initially it has coordination number 6. Finally it has coordination number 6. So both it is stable. Okay, both are stable. So this is the associative mechanism of SN2 of octahedral complexes. So what would be the rate of reaction in case of SN2 mechanism or associative mechanism? The rate of reactions will be represented like this K, MX5Y and Z. In means यहाँ पे क्या दो reactions use हो रहे हैं, that's why it is second order reactions. Okay. With and अगर इसको अगर एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है कि it is a first order reaction with respect to what? So अगर अपन सिर्फ एक reactant की बात करेंगे MX5Y या फिर Z only, with respect to one ligand it would be first order reactions. अगर दोनों reactant की बात overall reaction अगर बोलना है so it is second order reactions, but what can we say? We can say it is a first order reaction with respect to MX5Y or MX5 or Z. So this thing you have to remember. The overall reaction is second order. The formation of product MX5YZ can be shown under. So in overall reactions, what can we write? We can write that MX5 it goes slow step and it attacks on Z plus ligand. It forms 7 coordinated intermediate state. Then it immediately it leaves Y ligand, and at the end it forms MX5 diagrammatically. We can understand that as in association mechanism, initially this is the octahedral complex where it has 5 XXX ligand, in which 4 X ligands are in the plane and occupy the equatorial position, where 5th X ligand is occupy exile position and another exile position is occupied by the Y ligand. And in the first step, it attacks on Z, and in 7 coordinated intermediate step or step is intermediate state is formed, which is 7 coordinated, and its geometry or shape is by pentagonal bipyramidal. It immediate it's undergoes leaving of or dissociation of Y, and then it forms octahedral complex as a product. So in a reactant, coordination number is 6. In product, coordination number is 6. So octahedral there is association mechanism in octahedral complex. Now there is a little bit difference or differences between a dissociation mechanism and association mechanism. So first difference is it is a first step is metal ligand bond breaking. Dissociation mechanism में क्या होता है कि first step में metal ligand का bond break होता है, but in the case of association there is a in first step there is a metal ligand bond associating, यानी कि metal ligand का bond form होता है नए ligand के साथ attack करने का. Second, in dissociation mechanism, it is 5 coordinated activated complexes formed, but in the case of association mechanism, 7 coordinated activated complexes formed. Dissociation mechanism is the first order reactions, but association mechanism is second order reaction. It is unimolecular dissociation, and associative mechanism is bimolecular. So these are simple some or few differences between dissociative mechanism and associative mechanism of the octahedral complexes. So this is all about substitution reactions in octahedral complex with mechanism. मुझे लगता है कि आपको अच्छा लगा वीडियो. अच्छा लगा हो तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब करें. Thank you very much for watching this video.